कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं एक नई मंजिल की तरफ, ये तो एक पन्ना है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। Hello dear students and dear parents, let me introduce myself first. I'm Aparna Mishra and I'm mathematics teacher and welcome to our official YouTube channel Maths Bird. Here I would like to talk to the parents, especially to the parents. Why? Because I would like to share a story, and before that I would like to say one thing, that if your child is not doing well in any subject, believe me, it does not mean that your child is weak. My subject is mathematics, so I am here talking about the mathematics. So if suppose your child is not getting a good marks in mathematics, believe me, it does not mean that he or she is not good in mathematics or he or she is not good in studies. Might be there is a reason behind this. Maybe their basics is not clear. Maybe some concepts are not clear. So I'm here to help your child, and as I said that I would like to share a story, and this is my childhood story that I would like to share with you. When I was in grade 4, my mathematics was so good, and at that time my marks was like 95% above in mathematics. But when I was in grade 8, my mathematics was so poor. I was so poor in mathematics. And believe me, at that time, I was getting like 33 or 34%. And my teachers suggested to my parents that she is not able to doing well in mathematics, so it's my personal suggestion to you that said to your daughter, leave the mathematics. But my parents said to me, you can do better, you can do best. And believe me, in class 10th I got 93% marks in mathematics. And see, now I'm MSc B.Ed in mathematics, and now I am a teacher. Why I'm sharing this story to you? Just because I would like to say that please believe at your child and talk to him or her. Like, what is the reason why they are not getting a good marks? Because I have talked to many students, I have talked to many parents, and the thing was, every time parents was saying, मेरा बच्चा बहुत वीक है, ये नहीं कर सकता मैम, मैथ्स में नहीं कर सकता, पता नहीं टीचर क्या पढ़ाते हैं. Okay, and when I talked to students, ma'am, maths is very tough. I cannot, especially girls. They said to me, मैम बस 10th तक पास करा दीजिए, मैं छोड़ दूंगी मैथ्स. Why? क्यों छोड़ दोगे भाई मैथ्स? Believe me, students and parents, mathematics is very interesting subject and it is very easy subject. But the main thing is your child's concept should be clear. The basics should be clear. When I talked to students, then I came to know their basics are not clear. Right? Till grade 8, it is an age where we learn the basics and concepts of mathematics, and after grade 8, in grade 9 and 10th हम क्या करते हैं? We used to brush up our skills, right? हम अपने बेसिक्स को क्लियर जो कर चुके हैं उनको ब्रश अप करते हैं. बट थिंक अबाउट द चाइल्ड, अगर उसका बेसिक नहीं क्लियर है तो वो क्लास 9th में कैसे परफॉर्म करेगा? एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स. मैनी टीचर्स, बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने मुझसे कहा कि मैडम ठीक है, छोड़ दीजिए इन बच्चों को इनके हाल पर,
क्योंकि ये नहीं कर पाएंगे, बहुत वीक हैं। बट माई मोटिव इज समथिंग डिफरेंट। मैं चाहती हूं मुझसे पढ़ा हुआ हर एक बच्चा मैथमेटिक्स में जरूर अच्छा हो। वाई? बिकॉज मैथमेटिक्स इज बैकबोन। मैथमेटिक्स, विदाउट मैथमेटिक्स यू कैन नॉट थिंक अबाउट योर फ्यूचर। आप जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, मुझे एक ऐसा जॉब बता दो जिसमें मैथमेटिक्स यूज ना होता हो। इन योर डेली लाइफ सिंपल कैलकुलेशन आप यूज करते हो, राइट? सो इट्स माई मोटो कि जो मुझे मेरे चाइल्डहुड में फेस करना पड़ा वो अब किसी और बच्चे को फेस नहीं करना पड़े। मेरा मोटिव इतना है सिर्फ कि मैं अगर आपकी हेल्प कर सकूं, अगर मैं किसी भी एक भी बच्चे को प्रेरित कर सकूं उसके करियर के लिए, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। सो मैं आपसे यही चाहती हूँ, प्लीज टॉक टू योर चाइल्ड। अपने बच्चे से बात करिए कि आखिर उसे क्या प्रॉब्लम है और उस पर भरोसा करिए। अगर उसका बेसिक क्लियर नहीं है, उसे मैथ से डर लगता है, तो उसके साथ बात करिए। And the one more thing that I would like to say that I'm willing to help my dear students. So मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। So it's my sincere request to all dear parents and my dear students, just subscribe the channel and please press the bell icon. Why? Because I'm uploading a lot of videos for class 7th, 8th, 9th and 10th. Yes, class 9th I have uploaded the video. For class 7th I have uploaded the videos. Yes, still I didn't upload class 8th video, but वो मैं जल्दी upload कर दूंगी, right? So parents से मैं इतना चाहती हूँ कि मैं यहाँ हूँ। अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए मुझसे, you are most welcome. You can mail me. My email ID is mathsbird786@gmail.com. And it really will be great pleasure for me अगर मैं मेरे dear students की थोड़ी भी help कर सकती हूँ. And at last, I would like to say 2 lines for my dear students. रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक के ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। Thank you and please like my channel. Thank you so much. Thank you dear parents and thank you my dear students.